हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के चैप्टर 1 डीएवी क्लास 8 रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के चैप्टर के आगे रीड करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स तक कवर कर लिया था। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीड केयरफुली फॉलोइंग द फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट को रीड करते हैं पहले। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन: रेन्यूबिलिटी, ऑर्गेन्स, ऑक्रियंस, डेवलपमेंट। रेन्यूबिलिटी को रेन्यूबल, नॉन रेन्यूबल। ऑर्गेन को बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑक्रेंस को नेचुरल, मैनमेड। एंड डेवलपमेंट में पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेस में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेन्यूबिलिटी: रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज हमारा इनएग्जॉस्टेबल कहलाता है, जो कि कभी ख़त्म ही ना हो। रिसोर्सेज विच renewed either naturally or human effort are called renewable resources। एस renewable resource जो रहता है उसे हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, 1 to 1 बार बार हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं नेचुरली और ह्यूमन एरर। फॉर द एग्जांपल सोलर एनर्जी, एयर, वाटर। Some of the renewable resources are always available and do not get exhausted by human activity. For example, solar and wind energy. The equality of these resources can be affected by the impoverished uses. Resources which take millions of years for renew are called non-renewable resources। जो कि रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और रेन्यू होने में, उसे हम कहते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस। दे आर नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस एज दे कैन नॉट रेन्यू। एनर्जी रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम, natural gas and other minerals are example of non-renewable resources. There is a chronic about the over exploitation. They is available in limited amount for earth। ये जो है ना, एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ सरफेस में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज would be the exhaust. This is resource have to used carefully as complete exhaustion of these resources would have a derived activity on future generation. Some of the minerals like metallic ores, gold and silver are recyclable. They metal may be used again and again after process. Okay. Classification based on occurrence: resources which are obedient from biosphere and have life is called living beings are known as biotic resources। जो भी रिसोर्सेस हमारा बायोस्फीयर मतलब नेचर से हमें जो भी चीज़ मिले उसे हम कह सकते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, जिसमें लाइफ। फॉर एग्जांपल बर्ड, फिश, फॉरेस्ट। द बायोटिक रिसोर्स प्रोवाइड वेराइटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। दे हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस द रीजनरेट। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रेन्यूएबल बट सम टेक लॉन्ग पीरियड टू रेन्यूड। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेस है वो सारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो, वो सारे रेन्यू हो सकते हैं, लेकिन कुछ बायोटिक रिसोर्सेज टाइम लेते हैं लेकिन वो भी रेन्यू हो जाते हैं। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज ए बायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज है उसे हम ए बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। दे आर नॉट रेन्यू एक्सेप्ट वाटर, इट इज inexhaustible. They resource get demand for development various industry and agriculture. Classification based on occurrence: resources available for nature in the form of water, mineral, forest, etc. and used by human being to satisfy their need are known as natural resources. Many times natural resources, example water, the essential survival of human being and form the basis of development of country। जो कि हमारा वाटर है ना, वो बहुत ही इनिशियल सर्वाइवल ह्यूमन बीइंग है
for development of country. ठीक है. Resources created by human being to satisfy their need known as man-made resources. For example, road, building, machine, etc. Country which are not fulfilled trapped potential resources. For example, petroleum can be found in old sedimentary rocks, Himalayas, or hydroelectric can be generated by force of fall water. The potential resources need to delete survive, eliminating their quality and equality. A primary assignment for us geological survivor suggested the Arctic sea bed may hold as much as 25% of world undiscovered oil and natural gases reserved by one estimate 400 billion barrels. जितने भी गैसेस है ऑयल है वो टोटल 400 बैलेंस ऑफ मीट बेंट अरेबिक सी बेड्स वो अरेबिया में है. कहाँ है? एंटार्क्टिक सी बेड्स में है. The actual resources of a country are those which have been thoroughly survived as their quantity and have been examined. The exploitation, development and utilization of an actual resources dependent upon the technology available in. For example, Saudi Arabia has 25.9% of world oil reserve. जो सऊदी अरेबिया है उसके पास टोटल 25.9 ऑफ वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व है. ओके. Sustainable development and conservation. Sustainable development means development takes place without damaging environment. ऐसा डेवलपमेंट जो कि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए. It meets the needs the present without compromising the need of future generation. Therefore, resources should be utilized generally so that after fueling our present requirement, they are also converted for the future generation. Most of our resources are limited in their supply. Are as many valuable resources has lead to their degradation for destruction in quality. For example, soil, land, water resources. Therefore, it is essential that we first use all renewable resources. हमें हमेशा renewable resources का यूज़ करना चाहिए. Mines the depletion of natural resources, conservation of varied species. Okay. The use of resources vary from our country to another due to technology and skill. Human resources, the developed country like United Kingdom, UK and USA make optimization use of resources as compared to developing country like India. Distribution of resources across the world in highly uneven. Rapid population growth has resulted in overutilization of natural resources. This has led to districts depletion and degradation of natural resources. For example, overutilization of soil has resulted in depletion of the fertility of soil in many parts of the world. Thus, there is an urgent need to maintain a balance between population, resources, planning, and conservation. Resources should be used judicially, otherwise, mankind will face trade consequences. Over the last few decades, there are been tremendous increases in progress for the conservation of management of resources as they rapidly deleting and not to be converted. Conservation means sustainable optimization and utilization of resources. We must be release the natural resources and merely ours. They are ours.
They are also belong to future generation, thus necessary to us to resources more effectively reduce wastage development of technology, human skill, population control in initial of long-term sustainable of resources. We have created sustainable community for the sections of life on the planet easily ecological balance will be disturbed. Our earth is the only habitable planet, so spread answer for saving earth for future destruction. Follow fiber in reduce, reuse, recycle, refuse, rethink as the according to needs and according to grades care natural it care for you. ओके, तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि हमारा नेचर जो है वो हमारे लिए एक माँ की समान है। वो हमें फूड प्रोवाइड कराता है, वो हमें रहने के लिए घर प्रोवाइड कराता है। तो उसी तरीके से ये चैप्टर में बताया गया है। ओके, ये कीवर्ड्स को आप पढ़ लीजिएगा। ये कीवर्ड कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। और बाकी टिक द करेक्ट ऑप्शन वगैरह मैं कल की वीडियो में, आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर कमिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल। बाय बाय।